Good morning, students of class 12th. Welcome to your online classes of English. Today, in English, in the supplementary reader Vistas part, we will be covering out the chapter number 5, Should Wizard Hit Mummy? Now, what do you mean by wizard over here? Wizard means we are talking about the magician. Okay? That means, should the magician hit mummy? By John Updike. It's a fairy tale story. That means mostly the story what you are reading in with moral values and all. Okay, we are talking about those story, the fairy tale story, the pebbles and all. Okay, we are talking about those stories. Okay, now should wizard hit mummy by John Updike? First of all, I will be telling you about what are the main objectives and outcome of the lesson. The main objective of the lesson is that means mostly the parents want to teach their children be what you are. Never change yourself. Never try to change your originality. Okay, that means you should be what you are. What God has made you, you should be like that. Now, in this chapter, also, the father is explaining to a child like that. Okay, she is 3 or 4 year child and he is explaining to the child like that, but the child is not able to understand all this. Okay, that means the child mostly likes happy ending in the story. They do not want sad ending in the story. They want happy ending in the story. They want all that. So this is the main objective. What is the major outcome of the lesson? The major outcome of the lesson is that we should be what we are. We should never try to change ourselves. Okay, we should never try to change ourselves, and we should be like that only as we are, as God has made us. We should be like that only. We should never try to change ourselves. So, this is the major outcome of the lesson. Now, see, should Wizard Hit Mummy by John Updike? First of all, I would be telling you about the introduction part. In Should Wizard Hit Mummy, John Updike presents the worldview of a little child. That means John Updike is presenting what? A worldview of a little child. That means what is in the mind of a little child, what he thinks. Joe. Okay. Her character name is Joe, who is a little child. That means every week, that means she is listening to a story by her father. Okay. Warmly responds to her father's storytelling. That means she warmly responds to her father's storytelling. But she can't excuse Roger Skunk's mother. But she can't excuse Roger Skunk's mother for making poor little Roger smell bad. For making poor little Roger smell bad again. Okay, that means the mummy wanted what? Roger Skunk's mummy wanted her child to be original. Her child to be original. Her hero must smell like roses. But Joe wanted that Roger Skunk should smell like roses and must not stink at any cost. But not stink at any cost. उसके पास से बदबू नहीं आनी चाहिए. So she wants her father to make a little change in the story. So Joe wants her father to make a little change in the story. She wants him to tell a different story, and she wants him that
her father should tell a different story in that changed variation, with changed variation. The wizard takes a magic wand and hit Roger Skunk's money. Okay, that means the wizard should take a magic wand and hit Roger Skunk's mummy. That means wizard को जो है, that means should wizard hit mummy. That means wizard को जो है रॉजर स्कंक की मम्मी को मारना चाहिए था. ओके, ना कि जो है रॉजर स्कंक की मम्मी को विजार्ड को मारना चाहिए था. ओके, तो क्या करना था? दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू अ लिटिल गर्ल शी वांटेड अ हैप्पी एंडिंग. वो चाहती थी कि रॉजर स्कंक के पास से अच्छी खुशबू आए. ओके, एंड शी वांटेड व्हाट? एंड शी वांटेड दैट विजार्ड शुड हिट मम्मी. विजार्ड शुड हिट मम्मी. विजार्ड शुड हिट मम्मी. Okay, that means in the first paragraph we'll talk about, in the first paragraph we'll be talking about a 2-year-old custom story telling. That means a father is telling a story to a 2-year-old child. That means when his daughter was 2 years old, he is telling the story from then onwards. Okay, now see, father's name is what? Jack. Jack is telling the story to Joe. Okay, it's a old custom of telling the story. Jack used to tell stories to his daughter Joe in the evening and for Saturday naps. That means he used to tell the story in the evening time for Saturday naps. Okay, every story was a product of his head. That means he used to create the story on his own. Okay, this custom began when she was 2. That means this custom began when Joe was 2 years old. It continued nearly for 2 years. It continued nearly for 2 years. Each new story was a slight variation of the basic tale. Each new story was a slight variation of a basic tale. Every story had a small creature. Every story had a very small creature, just like the Panchtantra story what we are having. Okay, every story had a small creature, usually named Roger. Okay, in every story, that means the creature named Roger. Okay, it could be Roger fish, Roger squirrel, or Roger chipmunk. Okay, it could be any character, but the character name was Roger. In every story, Roger went to the wise owl. In every story, the Roger went to the wise owl, and the owl would send Roger to the wizard, and the owl would send Roger to the wizard. Now see, in the second paragraph, story of Roger Skunk. In the second paragraph, we'll be talking about the story of Roger Skunk. Now, his daddy, Jack, is telling the story of Roger Skunk to Joe. Okay. Now, today's story was about Roger Skunk. Today's story is about Roger Skunk. मतलब skunk किस प्रकार के creature होते हैं, animal which bads very smell. That means which bads very smells very badly. Okay, it stinks. बहुत बुरी बदबू आती है उनके पास से, वो जानवरों के पास से, क्योंकि they live in gutters. Mostly these skunks live in gutters. It is not found in India. Mostly in foreign countries. It is found in countries like Australia and New Zealand and all. Okay, so Roger skunk. It was a new animal. It was a new animal.
They must talk about it. They must talk about it at a nursery school. They must talk about it at a nursery school. Jack had got a new hero. Jack had got a new hero in the story, that is Roger Skunk. He started the story. That means Jack started the story. He is telling the story to his little daughter Jo. Once upon a time in the deep dark woods. Once upon a time in the deep dark woods. Dark woods means dark jungle. There was a tiny little creature by the name Roger Skunk. There was a tiny little creature named Roger Skunk. He smelled very bad. उसके पास से बहुत बुरी बदबू आती थी. He smelled so bad that the other little creatures would not play with him. मतलब उसके पास से इतनी बुरी बदबू आती थी कि दूसरे क्रीचर्स उसके साथ खेलते नहीं थे. They would run away. They would run away. Roger Skunk would stand there all alone. Roger Skunk would stand there all alone. Two little round tears would fall from his eyes. Two little round tears would fall from his eyes. Okay. Little Joe could already guess what would be the storyline next. Okay, little Joe would already guess what would be the storyline next. She asked, won't he see the owl? She asked what? क्या वो अब आउल के पास नहीं जाएगा? क्योंकि हर स्टोरी में दैट मीन्स जब किसी के साथ कोई बुरा वक्त आता था तो वो वाइज आउल के पास जाता था. ओके. जैक continued. Jack continued the story after that. There lived a big wise owl. वहाँ पे एक बड़ा सा वाइज आउल रहता था. In the tip top of a tree. That means ट्री के ऊपर, सबसे ऊपर वाली ब्रांचेस में वो रहता था. Roger Skunk told him his pathetic tale. रॉजर स्कंक ने अपनी दुख भरी कहानी उनको सुनाई. पैथेटिक मीन्स व्हाट? दुख भरी कहानी उनको सुनाई. द वाइज आउल एडवाइज्ड हिम टू गो टू द विजार्ड. तो वाइज आउल ने क्या सलाह दिया? वाइज आउल ने ये सलाह दिया कि रॉजर स्कंक को किसके पास जाना चाहिए? विजार्ड के पास जाना चाहिए. विजार्ड मीन्स मैजिशियन के पास जाना चाहिए. नाउ सी, Roger Skunk meets the wizard. After that, Roger Skunk meets the wizard. At last, Roger Skunk came to a little white house. At last, what happens? Roger Skunk came to the little white house. छोटे से white house में आ जाता है Roger Skunk. He had to cross the dark woods and the swamp. उसको जो है घने जंगल पार करके और दलदल पार करके वहाँ पे आना पड़ता है. ओके. दलदल पार करके वहाँ पे आना पड़ता है विजार्ड के पास, मैजिशियन के पास. ओके. स्वैम्प मीन्स जिसको हम दलदल बोलते हैं. अ लिटिल ओल्ड मैन केम आउट. एक छोटा सा बूढ़ा आदमी बाहर आता है. ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड. उसकी जो है लॉन्ग और वाइट बियर्ड थी, दाढ़ी थी. एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट. और पॉइंटेड ब्लू हैट वो पहना था. रॉजर स्कंक टोल्ड द विजार्ड हाउ ऑल द लिटिल एनिमल्स रैन अवे फ्रॉम हिम. तो रॉजर स्कंक ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कोई उसके साथ खेलता नहीं है. क्यों नहीं खेलता है? क्योंकि उसके पास से बहुत बुरी बदबू आती है और दूसरे जानवर उसको छोड़ के भग जाते हैं. ही स्मेल्ड वेरी बैड. ओके. द विजार्ड आस्क्ड रॉजर नॉट टू गेट वेरी क्लोज टू हिम. ओके. तो विजार्ड ने रॉजर से बोला कि वो उसके नज़दीक नहीं आए. ओके. इनसाइड द हाउस ऑल मैजिक थिंग्स वर
जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, क्योंकि बहुत सारी मैजिक की चीज़ें जो है इट वॉज जम्बल्ड टुगेदर इन अ डस्टी हीप। दैट मीन्स बहुत सारी जादुई चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी। अगर हो सकता है रॉजर का पाँव उसमें लग जाता, हो सकता है वो गायब हो जाता। ओके, इट वॉज लाइक दैट, दैट्स वाई विजार्ड टोल्ड हिम नॉट टू कम सो नियर टू हिम। ओके, द विजार्ड डिमांडेड 7 पेनीज। तो विजार्ड ने रॉजर से 7 पेनीज मांगे। ओके, 7 रुपये मांगे। ओके, इट वॉज लाइक दैट। ओके, 7 पेनीज। रॉजर हैड ओनली 4। Roger had how many pennies? He had 4 pennies only. He started crying. After that, he started crying. Okay. The wizard sent him to the magic well. फिर बाद में wizard ने उसको magic well के पास भेजा. Where Roger found 3 pennies more. जहाँ पे मैजिक वेल में, जादुई कुएं में रॉजर को 3 पेनीज मिल गए, तो हो गए उसके पास 7 पेनीज। इट वॉज लाइक दैट। ही टुक देम बैक टू द विजार्ड। फिर से वो विजार्ड के पास गया, मैजिशियन के पास गया। ओके, द विजार्ड वॉज वेरी हैप्पी एंड मेड हिम स्मेल लाइक रोजेज। After that, the wizard was very happy and made him smell like roses. All other little animals gathered around him. All other little animals gathered around him when he was smelled like roses. Now he smelled so good. अब रॉजर के पास से बहुत अच्छी खुशबू आती थी। They played games and laughed all afternoon. और सारे जानवर जो है फिर बाद में रॉजर के साथ खेलने लगे और समय बिताने लगे दोपहर का। इट वॉज लाइक दैट। नाउ सी, रॉजर स्कंक्स मम्मी डजंट लाइक द चेंज। लेकिन रॉजर स्कंक की मम्मी को उनके बच्चे का चेंज पसंद नहीं आया, क्योंकि मम्मी चाहती थी रॉजर स्कंक की कि उसका बच्चा जैसा है वो वैसा ही रहे। और जो भी जो है, जैक भी जो है, जो को यही समझाना चाह रहे थे, जो जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। ओके, कोशिश कर रहे थे अपने बच्चे को समझाने की। ओके, इट वॉज लाइक दैट। रॉजर स्कंक्स मम्मी आस्क्ड हिम what that awful smell was. Roger Skunk's mummy asked him what that awful smell was. That means तुम्हारे पास से इतनी बुरी बदबू कैसे आ रही है? Roger replied that he himself smelled like roses. क्योंकि वो चाहता था कि वो गुलाबों की तरह महके। ओके, द विजार्ड मेड हिम स्मेल लाइक दैट। और विजार्ड ने जो है रॉजर को ऐसे बना दिया। शी टोल्ड रॉजर दैट दे व गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। विजार्ड की मम्मी ने बोला अभी जो है दोनों विजार्ड के पास जाएंगे। बट रॉजर क्राइड दैट ही स्मेल्ड सो बैड बिफोर। तो रॉजर ने क्या बोला अपनी मम्मी से? पहले तो उसके पास से बहुत बुरी बदबू आती थी। ओके, दैट ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रैन अवे। और दूसरे एनिमल्स उसके साथ खेलते नहीं थे, उस बदबू के कारण जो है भाग जाते थे। द मदर सेड दैट शी डिड नॉट केयर। मदर ने क्या बोला? दैट मीन्स उसको नहीं मालूम, वो ये नहीं चाहती। ओके ओके, did not care for that. Roger skunk used to smell the way a little skunk should have smelled. That means रॉजर को जो है वैसे ही स्मेल करना चाहिए जैसे कि हम लोग करते हैं। हम लोग जैसे बने हैं वैसे ही रहना हमको पसंद है। दे वेंट टू द विजार्ड। फिर बाद में दोनों विजार्ड के पास जाते हैं। She went there with an umbrella. She went there with an umbrella. वो umbrella लेके जाती है। And hit the wizard right over the head. और उसने umbrella से जो है विजार्ड को उसके सर के ऊपर मारा। किसने मारा? रॉजर स्कंक की मम्मी ने। ओके, द विजार्ड मेड हिम स्मेल वेरी बैड अगेन। तो विजार्ड ने फिर से चेंज कर दिया रॉजर स्कंक को,
कि उसके पास से बुरी बदबू आने लगी। नाउ सी in the fifth paragraph, last paragraph, Joe wants the story change a little. That means little Joe wanted little change in the story. She did not like the end of the story that Roger smelt very bad again. क्योंकि फादर जो है अपने बच्चे को समझाना चाह रहे थे जो जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों को ये फ़िलॉसफी समझ में नहीं आती. दे do not want to understand all this. That means they want happy ending to the story. Only that they want. Okay. Now see, Joe did not like the end of the story. Joe को end पसंद नहीं आया. Poor little Roger skunk was made to smell bad again. The poor little Roger was made to smell bad again. She wanted her father to make a little change in the story. She wanted her father what? To make a little change in the story. Okay. She wanted her father to tell her that the wizard took the magic wand and hid the mummy. That means वो ये चाहती थी कि नाकी जो है रॉजर स्कंक की मम्मी जो है अम्ब्रेला से विजार्ड को मारे, बल्कि क्या करना चाहिए, विजार्ड को अपने मैजिक वैंड से रॉजर स्कंक की मम्मी को मारना चाहिए, क्योंकि उसने दोबारा अपने बच्चे को बैड स्मेल दे दिया. ओके, इट वाज लाइक दैट. शी वांटेड दैट. ओके, दैट मैजिक वैंड एंड हिड द मम्मी, रॉजर स्कंक्स मम्मी. शी insisted on making that change in the story. और वो बार बार अपने डैडी जैक से यही कह रही थी जो कि वो ये चेंज लेके आए स्टोरी में. शी वांटेड द हैप्पी एंडिंग. शी वांटेड दैट रॉजर स्कंक शुड स्मेल गुड अगेन लाइक रोजेस. ना कि उसके पास से बुरी बदबू आना चाहिए, उसके पास से अच्छी बदबू आना चाहिए. ओके, अच्छी खुशबू आना चाहिए रॉजर स्कंक की बॉडी से. शी वांटेड दैट. हु वांटेड दैट? जो वांटेड दैट. शी वांटेड हैप्पी एंडिंग टू द story. So this is the story all about. Thank you very much all. God bless you all. Be safe and healthy. Always take care of yourselves.